गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लोड बैलेंसर इन द सिस्टम डिजाइन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिस्टम डिजाइन के फंडामेंटल को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो या लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम चलते हैं इसके डिफिनेशन से। तो लोड बैलेंसर होता क्या है? देखो, सिंपल इसका डेफिनेशन है कि लोड बैलेंसर इज अ सिस्टम दैट डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग यूजर रिक्वेस्ट across a multiple server to improve the performance, reliability and availability. और सिंपल शब्द में बोल सकते हैं कि सपोज लोड बैलेंसर एक ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, जो कि अलाउ करता है कितने यूजर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं सर्वर से। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ये बहुत अच्छा क्लियर होगा। सपोज हमारे पास ये सब यूजर्स हैं, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री। यूजर्स मीन्स यहाँ पर हमारे पास हो सकता है क्लाइंट या मोबाइल यूजर्स या डेस्कटॉप यूजर्स, एनीवन। और ये चाह रहा है कि सर्वर से कम्युनिकेट करना, या सर्वर टू से या सर्वर थ्री से। इन दैट केस हम डायरेक्ट वैसे जाकर कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लाइक वन टू वन भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है, बट हियर इन द केस ऑफ सिस्टम डिजाइन वी हैव अ concept ऑफ लोड बैलेंसर। सो लोड बैलेंसर का वर्क यही सिंपल होता है कि ये इनकमिंग ट्रैफिक, जो भी इनकमिंग ट्रैफिक आ रहा है, इसको ये क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है, फिर डिसाइड करता है कि सर्वर के पास इसको भेजना है। दिस यूजर को सर्वर वन के पास भेजना है, या सर्वर टू के पास भेजना है, या सर्वर थ्री के पास भेजना है। तो दिस इज द मेन टास्क ऑफ लोड बैलेंसर। अगेन, लोड बैलेंसर कुछ नहीं होता, जस्ट ये क्या कहते हैं, इनकमिंग रिक्वेस्ट जो भी आती है उसको एप्रोप्रिएट सर्वर पर रीडायरेक्ट करता है। सो एक अलग और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी we have server 1, server 2, server 3. These are the examples we have. And load balancer simple. It is saying like whenever one new request is coming on, it will go and redirect that request. Whatever the request we are getting, it will take that request. It will go and redirect to server 1 or server 2 or server 3. Same example we can see here. So here we have client 1, client 2 and client 3. Client means what? We have mobile users, desktop users, or any person who are going to use our application. So in that case, maybe like they can their request can go on the server one, their request can go on the server two, their request can go on the server three. So किस सर्वर को भेजना है, like suppose this server is very busy, this server is not very busy. In that case, load balancer will choose few algorithm, and it will decide where it will redirect whatever the request it is getting from client one, uh, okay, to which server it will redirect. So this is the mota moti concept I can say of the load balancer. So देखो, अब मान लो कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी लोड बैलेंसर, देन व्हाट विल बी हैपन, ओके। तो अगर लोड बैलेंसर का हम यूज नहीं करते, एक सिंपल आइडियोलॉजी समझो, अगर ट्रैफिक पुलिस ना हो तो व्हाट विल बी हैपन। ट्रैफिक पुलिस नहीं होगा तो सिंपल रीजन है कि यू विल सी लॉट ऑफ क्रैशेस ओवर द रोड, and incident can be happen over the road. There will be lot of problem in the road, in the traffic police, in traffic. So same analogy I am going to predict here, load balancer अगर नहीं होगा तो एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है, इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज एक ही एप्लीकेशन के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट आ सकता है, जो कि एप्लीकेशन जो कि सर्वर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर सर्वर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा ह्यूज अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट, तो एप्लीकेशन क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है। दूसरा चीज ये है कि अगर एक ही पर्सन या एक ही सर्वर के पास बार बार रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो उसको प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे होगा क्या कि सिंपल हमारा सर्वर का जो कैपेबिलिटी है, रिस्पॉन्स टाइम, वो डिग्रेड हो सकता है। सो एंड थर्ड पॉसिबिलिटी भी है, सर्वर ओवरलोड हो सकता है। ओवरलोड होने की वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकते हैं, सर्वर का रिस्पांस रेट स्लो हो सकता है, एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है, डाउन टाइम हो सकता है। तो दीज आर द प्रॉब्लम अगर हम लोड बैलेंसर का यूज नहीं करेंगे तो। नाउ अब सपोज हम लोड बैलेंसर का यूज करते हैं तो व्हाट विल बी बेनिफिट। पहला बेनिफिट होगा कि हम अपने सिस्टम की स्केलेबल बना सकते हैं। कहने का मतलब हमारे पास 5 to 6 आई कैन से सर्वर है। तो हम सपोज राइट नाउ हमारे पास सिर्फ 5 सर्वर है, तो इन फ्यूचर वी कैन ऐड 10 सर्वर, 20 सर्वर।
तो ये बहुत ही ईज़ी हो जाएगा हमको मल्टीपल सर्वर ऐड करना। मल्टीपल सर्वर ऐड करने का मतलब होगा कि वी आर गोइंग टू इंक्रीज द सिस्टम, लाइक वी आर गोइंग टू स्केल द सिस्टम। दैट इज वन बेनिफिट, हाई अवेलेबिलिटी। सेकंड बेनिफिट क्या है कि अगर हमारे पास एक ही सर्वर है, थिंक लाइक वी हैव जस्ट वन सर्वर और दैट सर्वर हैंडलिंग एवरीथिंग। सपोज कोई प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लाइक ओवरलोड हो गया या सिस्टम क्रैश हो गया या सिंगल सर्वर टेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट, तो रिस्पांस रेट कम हो जाएगा। तो दैट इज द बिग प्रॉब्लम। बट अगर हमारे पास लोड बैलेंसर है एंड वी आर गोइंग टू लेवरेज लोड बैलेंसर, तो सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या बढ़ जाएगा। परफॉर्मेंस यू मीन लाइक परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, लाइक रिस्पांस रेट भी बढ़ जाएगा, वी कैन से हियर। एंड आल्सो लाइक वी कैन से लाइक सिस्टम के अवेलेबिलिटी, लाइक जब भी आप लाइक रिक्वेस्ट करोगे एनी वन कैन रिक्वेस्ट, दे विल गेट देयर करेक्ट इन्फॉर्मेशन, लाइक दे विल नॉट गेट एनी सॉर्ट ऑफ मैसेज लाइक सर्वर इज गोइंग टू फेल। And what is reliability? Reliability is something like whatever the information we are getting from the server, they are very reliable, they are stable. So they are the like reason why we are going to use load balancer. So and here we can see load balancer, जैसे मैंने बताया कि load balancer can take can use multiple algorithm to redirect the request. Suppose this is the end user and he is going to request one, request two, request three, request four. So this is the load balancer. ये क्या करता है, इसके बाद multiple algorithm रहते हैं, like it can use round robin algorithm right now। राउंड रॉबिन सिंपल है कि पहला रिक्वेस्ट किस सर्वर के पास भेजेगा, दूसरा रिक्वेस्ट को उसको इसके बाद भेजेगा, तीसरा इसके पास भेजेगा, फिर जो फोर्थ रिक्वेस्ट आएगा यू कैन सी इट विल गो एंड सेंड टू द सर्वर वन। So they are going to follow the round robin approach, like in sequence manner. First, this server will be served, then this server will be served, then this server will be served. So this is the typical example of the round robin. Um, yeah, an example two we can see like same, like we can see like I give same example। so now we can see like अगर हम राउंड रॉबिन के यूज करते हैं, हम कब यूज करते हैं, जब हमको पता चले लाइक all server capability are equal, system is very simple। And what is the pro? Suppose I'm going to use round robin. In that case, for us it will be very easy, like a round robin anyone can implement। and fair distribution of the traffic, suppose जितने भी ट्रैफिक लोड बैलेंसर के पास आ रहे हैं, तो अगर हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज करते हैं, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जितने भी ट्रैफिक है। ठीक है, इनकमिंग रिक्वेस्ट है। प्रॉब्लम क्या है, इसका कॉन्स क्या है? समटाइम्स लाइक ये इग्नोर करता है सर्वर लोड, समटाइम्स लाइक one server has huge amount of loads। In that case it will also share the request, send the request. This is like one of the problem। And second algorithm we have, we can say list connection algorithm। So suppose here we can say list connection, suppose server 1 has just 50 connection, and server 2 has 100 connection, and server 3 has a 200 connection। So here the request will be go there where like we have least number of connection, like here just a 50 number of connection here we can see। So here we have just 50 number of connection, so request will go here many times। This is the main crux I can say about the least connection, or this is very smart algorithm and mostly they are being used in the industry। Suppose we can say like connection is going down here again, like here right now here we are getting lot of requests, so connection is going to increase, but here connection is going to down। So in this case I will use this one। So my load balancer will take this request and it will redirect to here server 2, not here, because here connection is very high, here connection is very less। So this is the idea behind the least connection smart algorithm। And what is like I can say benefit? So it is saying simple request goes to the server with minimum active users। So suppose one server has a minimum active users, like here I can say this server has a minimum active users, a list connection, in that case request will go to the that server only। So इसका हम यूज कब करते हैं, whenever like we have very heavy traffic, in that case हमको वहां पर रिक्वेस्ट भेजना है जहां पर लेस एक्टिव यूजर है, उस सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। तो इन दैट केस मेरा लोड बैलेंसर लिस्ट कनेक्शन इस एल्गोरिथम को यूज करता है। इसका प्रोस क्या है, लाइक इट इज बेटर परफॉर्मेंस एंड लोड अवेयर, लाइक
it will try to load the each and server with equal number of connection. And problem, what is the cons? Like whenever you are going to implement dynamically, in that case, it is slight complex to implement. Now let's see on list connection one live example. I taken this image from the AlgoMaster. So here you can see. Um, so these are the clients, and here you can see this connection. This server has just 113 connection. This server just have 50 connection. This server has connection 100. Connection is mean like number of active users. Server 3 has. Server 2 has number of active users 50. Server 1 number of active users we have 10. So when the request will come, they will go here. Why? Because they have least number of connection. So this is the basic fundamental idea about village connection. Like whenever balancer is going to use. So I think it is clear. It's pretty easy to understand. So now we are going to understand a weighted round robin. So this is one of the most, I can say, important algorithms. Suppose again I'm using this image from here. So here we can see like this server one has the weight 5. What is the meaning of weight? Like they have strong capability. Like they have more stronger hardware, software, everything they have. Resources, infrastructure they have compared to server 2 and server 3. So of course it has more infra than the server 2 and server 3. In that case, all the requests will redirect it to here. Like 90% of all requests will be redirected here, and 10% will go here and here. So because why? Because the weight of this server, like they have stronger infra. That is the reason. And now we are going to see like weighted round robin has been clear. So this is the same concept I've given the example again. Now what is the way we can use? So we can use the round robin, weighted round robin. When different server has different capacity. And what is the pros? Pros here we have like efficient uses we can do. It is very flexible, and there's one problem like we have to tune the parameters. So this is the like I can say drawback of this algorithm. Now we have IP has a consistent hashing. This is the one of the very famous algorithm. I'm just giving the brief idea here. So like suppose we have here we have like suppose we have one user here and so this user this user wanna communicate with any server, suppose this server. In that case, what? So it will have its IP address. So I will apply like a load balancer will apply IP some hashing algorithm try to hash the whatever the IP address it will have, and then it will go on the server index, and this server index is going to keep the index of each and every server. So accordingly, like it will find the index of the server and it will redirect this request to the appropriate server. So this is the basic idea about the like IP hash. And here like the advanced version, the accurate version, you can say the enterprise level. They are going to use consistent hashing. This is the most important, and I'm not going to discuss here. I will go and discuss in the next video. So basically, I wanna say like IP address में simple है कि like मेरे पास एक client है, ये किसी सर्वर से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो जब लोड बैलेंसर के पास ये रिक्वेस्ट आएगा तो ये लोड बैलेंसर इसका आईपी एड्रेस लेगा, हैश फंक्शन अप्लाई करेगा, उससे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी सर्वर इंडेक्स के पास भेजेगा। सर्वर इंडेक्स के पास होता क्या है कि हर सर्वर का इंडेक्स रहता है, तो उसके बेसिस पर डिसाइड करता है कि सर्वर के पास इस रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करना है। You can see it will take the IP address of the client, apply some hash function, map to the server. इस सर्वर को किस सर्वर के पास जाएगा? Okay, now you can say how hashing they are going to apply. So load balancer simple hashing is apply करता है client का IP address and apply some hashing algorithm. And total number of suppose we have 5. So here we will get the index. So this is the index. On the basis of this index, we can go on the appropriate. I can say. Server. So this is the one of the like basic definition. This is not I can say correct. IP has a implementation in the enterprise. In the enterprise, we are going to use consistent hashing. Now we are going to use like so yeah. So these are like basic.
definition and idea behind the load balancer. And in the next video I will try to give more like clear concept, and we can clear each and every fundamental of system design day by day. So thank you very much.